So good morning, everyone. Let's start our today's session. As we know, this month we are doing all the practical activities, correct? Last week we've done MIT App Inventor and आप में से बहुत सारे students ने कुछ apps बनाए. Today we are going to discuss a second topic and the topic name is Teachable Machine. Okay. So today we will learn what is Teachable Machine and how does it work. कैसे काम करता है Teachable Machine? होता क्या है? And क्या टेक्निक इसमें यूज होती है? Okay, so Teachable Machine is a web-based tool that makes creating machine learning models fast, easy and accessible to everyone. यानी कि जो हमारे ऑलरेडी बिल्ड मॉडल्स हैं, जो एल्गोरिदम्स लगी हुई हैं, जो लॉजिक्स लगे हुए हैं, वो मशीन लर्निंग कैसे अडेप्ट करती है एंड उसके थ्रू कैसे हमारी वर्किंग को इजी और फास्ट बनाती है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टीचेबल मशीन. Okay, so we will learn this with the help of some practical things. So for that, you all have to go for the Google search and यहाँ पर आप type करेंगे teachable machine. Just click on that. And when you search teachable machine, you will get the first link of teachable machine here. Okay, where we will be learning how to train a computer to recognize your images, your sounds, and your poses. How does it recognize all these things and how does it react for that? Correct? So just click on the first link after searching Teachable Machine, this one. When you click on that, you will be reaching on this platform. That is at teachablemachine.withgoogle.com. So it's a very simple platform जो हमें show करता है कि machine कैसे learn करती है, okay, and कैसे हमें outputs देती है according to the given input. So we have three types of projects in this. We will be learning one or two today, and then you will be showing how does it work. So let's click on this, get started. When you click on this, get started, you will be seeing three types of things here, as I told you. कि हम यहाँ पर तीन तरह के projects बना सकते हैं. One is image project, second is audio project, and third is pose project. So क्या difference क्या है तीनों में? Simple, जैसे कि name से हमें clear हो रहा है. Image project will show how does a machine learns the image and just reply that it is the right picture, right image or not. Audio project में हमें दिखाएगा कि the audio that we are getting is the same audio that we learned or not. And similarly the pose में आपका complete pose आता है. So image and pose में कुछ similarity है कि वो एक picture को सामने देख रहा होगा, but image हमारी static image होती है, stable image, correct? And pose में हमारा complete pose होता है from the files on your webcam. So that is a basic difference. Okay, so let's start learning with the first project. हमारा first project कौन सा है? Image project. So we will click on this image project to learn how does it work. It will ask you that you are going for the standard image model or embedded image model. So for now, we are going for standard image model. Click on that. Here you have these much of options. Class. सबसे पहले आपको बताना होगा class क्या है. Okay, class is the name. आप जो भी object इसको teach करना चाह रहे हैं ना, what is the name of that? You can keep the name at the place of class name here. ठीक है. So let's take an example. हम कोई भी जो pictures हम दिखाने वाले हैं, if I'm saying I'm going to show some colors, so I'm keeping the name colors here. So the class name is colors. So when I will see the results, I'll see the name colors there. So this is the name of the object. After that, I have to add sample images from here. So to add sample images, I have two options. One is webcam से directly picture ले लो. आप webcam open करोगे, सामने webcam open हो जाएगा, and then you can take directly pictures. And the other one is how to upload pictures. Upload में आपको क्या करना होगा? That you are directly uploading the picture from your system. Okay, so if I'm going from the upload, I'll click on upload and it will ask you to drag and drop the files or just import the files from your system, from your Google Drive, from your laptop, from your files.
Clear? But now I'm not going to import the images or upload the images. I'm going to use the webcam here. Okay. So let me open the webcam. Just a minute. तो मैंने webcam open किया है. After opening up the webcam, I have to show some images to record. As I told you, मैंने name किया था colors, so I'm going to show a color box here. Now, here is a button of hold to record. So, showing the picture, you have to just record the picture. So, click on this from every angle. And you can see there are the samples coming. 43 image samples are there. Okay. And from every angle, you have to take pictures. Okay. So, this is done. So, for first class, we have taken 43 image samples. Right? Now, I have to compare it with something. So after the first class, I have to take another class. तो first हमने लिया colors. अब हम second लेने वाले हैं one more picture. So I'm going to take colors लिए हैं तो let's say color book. So my second class is color book. Okay. And I have to take the pictures of color book now. क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट जो भी सैंपल हम बात कर रहे हैं वी हैव टू टेक द इमेजेस ऑफ दैट सैंपल दैट ऑब्जेक्ट ओनली. ठीक है. So again I have to open the webcam and I have to take the pictures. The webcam is open now and I have to take pictures. So here is the color book. From every angle you have to take pictures. Okay. So now we have taken two objects here. अब क्या करना है? Should we compare these two pictures only या अभी और ले लें? We have taken two objects. सबसे पहले हमने colors class लिया and उसमें हमने colors class में we have taken some sample images. कैसे? हमने webcam open किया. Okay. And हमने color के sample images लिए यहाँ से. Then हमने एक और class ली that is the color book and for that class again I have taken many sample images with the help of webcam again. Okay. Now if you've taken some wrong images, ठीक है, कोई पिक्चर ऐसा है नो दिस इज नॉट अ गुड इमेज एंड वी शुड नॉट यूज दिस, तो आप उसको डिलीट कैसे करोगे? सो यू जस्ट हैव टू गो टू द पर्टिकुलर इमेज एंड देयर इज अ बटन ऑफ डिलीट. किसी भी पर्टिकुलर इमेज पे आप जा सकते हो. ठीक है. किसी भी पर्टिकुलर इमेज पे आप जाओगे तो वहां पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा. तो जो भी इमेज आपको लगता है कि इज नॉट गुड इनफ या ब्लर्ड है या नॉट रिलेटेड टू टॉपिक है या गलती से आ गया है, यू कैन जस्ट डिलीट दैट बाय क्लिकिंग ऑन दिस डिलीट बटन. क्लियर? ऑल्सो देयर इज एन मिनिमम अमाउंट ऑफ सैंपल इमेजेस एवरी टाइम. आप जब भी इमेज लोगे आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस लेना ही पड़ेगा टू ट्रेन द मॉडल. इट्स नॉट लाइक कि आपने वन इमेज लिया टू इमेज लिया एंड उसके बाद आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो. दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके. सो द मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल इमेजेस यू हैव टू टेक. अभी मैंने बहुत सारे लिए हैं, मिनिमम नंबर से भी ज्यादा लिया हुआ है. 85 इमेजेस मैंने कलर्स में लिया हुआ है एंड आई हैव टेकन 103 इमेजेस इन कलर बुक बिकॉज इट इज वेरी इजी. In a simple click you will get 3-4 images in one go. Correct? Now let's take one more class.
अभी 2 क्लासेस का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा था, बट आई वांट नहीं, सिर्फ 2 पिक्चर्स मुझे नहीं कंपेयर करना है, आई वांट सम मोर इमेजेस जिसमें कि कंपैरिजन हो. So I'm taking one more class here. So here is an option to add a class. Just click on this add a class. And I'm taking this class, let's say smiley. And now I have to take some sample images of smiley. Correct? So let's do it again. I'll again open my webcam and I'll take again some pictures. Webcam is open and here is the smiley. So you have to take from every side of the object. The image should be from every side. It should be from 360-degree view. Okay. So now I have taken 3 object sample papers, sample images. So there is no limitation कि आप कितने पिक्चर्स में मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो या कंपैरिजन करना चाहते हो. Still you have some other objects, you can add more classes here. जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आप कंपेयर करना चाहते हो, यू कैन ऐड एज मेनी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हियर. ओके. नाउ here are the 3 button option also. So clicking on this, you have again many options. Like आपको ये क्लास ही डिलीट करना है कि नहीं, अभी आई वांट टू कंपेयर द कलर बुक एंड द स्माइली. आई डोंट वांट कलर्स हियर. So if you want to delete the complete class, you can just go to these 3 buttons and here is the option to delete class. So this class will be completely deleted from here. Okay. If you want to disable the class, means class available रहना चाहिए, but for now, I don't want to compare that. But it should be present. In future, I can use that and I can just remove the disability. So you can do that with the help of this disable class. Remove all samples. The third option means अभी क्या हुआ था, अगर हमको पिक्चर नहीं समझ आ रहा था तो we were deleting pictures one by one, correct? But here are 85 images. Now I want कि नहीं, मेरे को तो 85 के 85 images I don't like them. What should I do? आप one by one delete करोगे, 1 2 3 4, so you have to delete 85 images one by one. So you have to click on delete button 85 times. Correct? But if you want to delete all the samples in one go, you can do it with the help of remove all samples. ओके. नेक्स्ट है आपका डाउनलोड सैंपल्स. आपने जो सैंपल इमेजेस लिए हैं, आपको वो चाहिए पिक्चर्स. पिक्चर्स आर वेरी गुड, आई जस्ट वांट टू डाउनलोड देम, और you need to use them again somewhere, or you just need those pictures in your system, whatever is the reason. If you want to download all the sample images, you can just do that with the help of this download samples. Clear? And the next one is save samples to drive. So again, if you have images that you want to just save somewhere in the drive, or so you can do that with the help of download samples too, because you have the download images now. आप उसको जहां भी चाहो save कर सकते हो. And if you want to save them to the drive, आप वो यहाँ से directly भी कर सकते हो. Clear? So I'm repeating again steps in a very brief manner, and then we'll train the model. So there are 3 type of objects. Okay. सबसे पहले हमको class name रखना है. So if we don't want to change the class name, आपका वो भी चलेगा, class 1, class 2, class 3. बस आपका वही visibility होगी after training the model. And if you want the clear names there, so you can just change the class name with the help of this edit button. Clear? अगर आप यहाँ पे class 1 रखना चाहते हो तो भी आपका project work करेगा, model train होगा, reply भी करेगा. बट इफ यू वांट टू चेंज दैट, तो अभी जैसे हमने अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए वी हैव चेंज्ड द नेम्स ऑफ ऑल द 3 क्लासेस, कलर्स, कलर बुक एंड स्माइली. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक सम सैंपल्स. सो विद द हेल्प ऑफ वेबकैम मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन द सैंपल इमेजेस.
So I've kept the class name similar to the images that I'm taking. So अगर मैंने कलर्स की पिक्चर ली है तो आई हैव टेकन द क्लास नेम कलर्स. अगर मैंने कलर बुक की पिक्चर ली है तो आई हैव टेकन द क्लास नेम इज कलर बुक. एंड इफ आई हैव टेकन द पिक्चर्स ऑफ स्माइली, सो आई हैव टेकन द क्लास नेम इज स्माइली, सो दैट क्लियरली विजिबिलिटी हो. जब हम आउटपुट देखें तो जो भी हम देख रहे हैं हमारा वही नाम वहां पर विजिबल होगा. Clear? And there are sample images का number भी. So in colors we have taken 85 sample images. In color book we have taken 103 sample images. And in smiley we have taken 118 images. I hope this is clear till now. Okay. Now after that what we have to do? अभी हमको सिर्फ 3 classes लेने हैं. हमने कोई और class add नहीं करना है. Okay. So we have taken 3 classes and now we are going to train our model with the help of these 3 classes only. So here is a button of train model. After taking sample images, after taking the class names, what we have to do? We are just training the model. So click on this train model. And it will take some seconds to prepare training data. Okay. So just let's the model get trained. जैसे ही हमारा model train हो जाएगा, after that, we can just check that it is working or not. So you can see the model is getting trained. And the time is showing here. कितना अभी हमको time लगेगा. So you can see it takes some seconds to do that. And here is the model trained. Right? Now you can see for now my picture is there because webcam open है हमारा model हमारा train हो गया है. And हमारी जो classes हैं that will be visible. So now if I'm showing the smiley here, you can see which is coming 100%. Which class is showing here the 100%? Smiley. Now if I'm showing the colors, you can see the colors is 100%. And color book and smiley is not coming in any percent. For smiley, smiley is the 100%. And now if I'm showing the color book, can you see which picture is coming? जो भी हम शो कर रहे हैं वही पिक्चर हमारा 100% हो रहा है क्योंकि हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है उस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो हमने सैंपल पेपर्स स्टोर किए थे. Okay, so this is how teachable machine works.